Hello, everyone, and Assalamu alaikum. Welcome to Amal Stories Alumni Connect series. I want to start today with a quick question for all of you. Have you ever faced a turning point that changed the course of your career or life in an unexpected way? Moments like these often shape who we are and where we are headed. And today, we are about to hear from someone whose journey is filled with such transformative experiences. I'm Adnan Tariq, and I'm thrilled to welcome you to Alumni Connect session. Our guest today, Noor Asif, has navigated his own challenges and breakthroughs, building a remarkable path rooted in resilience and creativity. From his early steps to his achievements today, Noor's stories speak to the courage it takes to step into new opportunities, and even when the road isn't always clear. As we dive into his story, I encourage you to think about your own journey and the choices that have shaped it. Feel free to share your reflections and questions along the way, and this is a chance for all of us to learn, connect, and be inspired. Let's give a warm welcome to Noor Asif. Thank you so much for being here with us. And to begin, could you please tell a little about yourself, how you got started, and what inspired you on your path? I hope Noor Asif, you can hear me. Yeah, I can. Thank you. Got Perfect. Perfect. To start off, could you please tell us about yourself? Yeah, sure. First of all, thank you, Mr. Adnan, for giving me this opportunity and to being invited at the Amal Academy for this prestigious platform. So, my academic background was BSc Agriculture, University of Agriculture, Faisalabad, Noor and after Asif, I hate to cut you here, but yeah. there was a lag earlier, and we were not able to hear you properly. So could you please start over again? Hello. Yes, we can hear you now. So I was just requesting if you Okay. could start over again. Yeah. Yeah, sure, no problem. So, first of all, let's start with the introduction. And first of all, I want to thank Amal Academy for giving me this opportunity for the invitation to share my story, my journey, and all the pros and cons, and all the struggle and all these resistances which I have faced during my journey. So, myself, Noor Asif Ali, and I am a landscape engineer over here in UAE, Abu Dhabi in Basatin Landscaping. So it's almost around 2 years in this organization, and the journey wasn't the way it looked like now. It was full of struggle and sacrifices and the challenges which I have accepted, I have opted, and I would highly thank this platform where I am right now, and I'm sharing my journey, Amal Academy, which has really played a vital role. I am right now. If I talk about my academic background, that was in BSc Agriculture from University of Agriculture, Faisalabad. So इनिशियली अगर मैं बताऊं कि इस फील्ड में एग्रीकल्चर में जब आया तो देर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म के ये इतना हाईली पेइंग फील्ड नहीं है, इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी बियॉन्ड एक जो मिथ बनी हुई है कि या डॉक्टर है या इंजीनियर है, देयर इज नो एनी अदर प्लेटफॉर्म विच वी थिंक अबाउट लाइक एट दैट टाइम। लेकिन जब वी ऑप्टेड दिस जर्नी दिस प्लेटफॉर्म एकेडमिक डिग्री स्टार्ट की, तो आफ्टर दैट कनेक्टिंग डॉट्स विद द डॉट्स डिग्री शुरू की, उसके बाद हॉर्टिकल्चर मेजर चूज किया,
After that, I had a small struggle in Pakistan, and now I'm here. So it's small about myself, my Hmm. background. Thank you so much. And we would love to dive deeper into your story as well as we move forward in this conversation. So, currently, you mentioned that you are working as a landscape engineer in Abu Yeah. Dhabi. So, I would really love to know that what is one thing that really excites you about your job? Yeah, definitely. Actually, the culture is totally different while we think about the culture in the Pakistan. Overall, corporate culture and the job culture is totally different. Now, here we have to manage diversified multicultural teams. The teams are from the different nationalities. They are Indian, they are Bengalis, and few of them are also Pakistanis. So we have to manage the different teams over here. So it's quite challenging to synchronize with their capacity and synchronize with their mindset to manage them and to get what we want, the outcome of that. So it's really excite me to manage the multicultural and the diversified team that is also playing a leadership role in that position is quite exciting and quite challenging as well. That's amazing. And being able to work in a diverse team that really adds a lot to our learning as well. And if I talk about your from the technical aspect, like landscape engineering, so Yeah. what is something that excites you about the whole thing, about your job? Yeah, and definitely I would love to add this during my degree and the time I have spent in Pakistan, I was not as average as the person must be in their in behalf of the technical knowledge, in behalf of the technical skills we acquired during our degree. As I would mention that our degree was at COVID time now. So there was a big lag which we have faced. Like we did our whole degree online via Zoom, or we had an online classes, and there was like a great gap between our degree and our teachers and all that stuff. So I will say, okay, I haven't acquired as much knowledge as the person must be during their academic qualification or their academic perspective. So there was friend of mine, Mr. Ahmed, whom I joined during my time in Pakistan after my academic qualifications. So he always said to me, Noor, please try to at least remember the names of the plants. Like the plants which we have over here in UA, in UAF, University of Agriculture Faisalabad. There are multiple plants in UAF, and I wasn't unable to remember the name of. I would say I was hardly know the names of 2 to 3 plants species in UAF. And currently, if I say I have a deep understanding and a deep knowledge of regarding my field, I would mention that if you wanna acquire, if you wanna achieve something, or if you wanna have a dream or something you want to achieve, you must have the strong technical knowledge of your field, the field which in which you want to excel, in which you want to even you wanna be a landscape engineer. In my field, there must be another positions highly we can say the standard roles. Uh, the next position is project manager, and next position is operational manager. So you must be having a proper technical knowledge of that field. That will be like a core aspect to excel and to move forward. Right, that makes sense. And so, Noor Asif, we've been using a lot of technical terms as well here, or I would really like you to clarify this to our audience as well कि लैंडस्केप इंजीनियर कौन होता है मतलब अगर आप वन लाइन में शॉर्ट फॉर्म में बता दें तो दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू एवरीवन हु हैज जॉइंड दिस कॉन्वर्सेशन. Okay, definitely I would. So the landscape engineer is over here in UAE. It is some kind of connector. We have three stakeholders involved over here. One is from country our company side, which is project manager, and from other client perspective, he is also a landscape engineer or the manager. There's a whole team of that involved. So landscape engineer is kind of connector between the client side and the company side, project manager. He's a kind of in every meeting he has to be the front face. He has to solve the inquiries of the client.
and he also have to like get the new variations or the new projects or the anything which is like wrong, or there is any like we can say difficulty in managing everything on site. So in landscaping engineer role, it is kind of working come of both. He has office duties as well, and he has like site duties as well. So he has to manage reports, he has to manage teams on sites. There are like under landscape engineer, there are various supervisors as per the we can say the overall site perspective, like how big the site is or how big the project is. That's how like engineer role is like. It is kind of connector between the client side and the company project manager side. He has to manage reports, and he also have to like to solve the inquiries client is raising. Mm-hmm. Right. And thank you for sharing that and talking about your responsibilities as well as connecting with stakeholders during this process. So let's take a step back and dive deeper into the starting point of this journey. So you have already shared your academic qualifications, and we would love to know what was the whole journey like when you graduated, how you decided to be in this role, and then when you are already here, what are the challenges? Challenges पर तो चले बाद में आते हैं, but we would love to know the story behind this. Yeah, sure, sure. So I would mention like the journey isn't always simple as it look like, and the path isn't that straight as it look like now. Like the current position where I am right now, it will look like it was like a bed of roses. It's not like that. There was a lot of criticism and a lot of resistance involved while like coming here and doing all this struggle. I would start like right after my bachelor degree, which I have completed. So there was a dead end. Like what else? What now? Uh, After bachelor degree, there was totally like blank page. Degree is done. There was that was the only option. Like we haven't only other option. Like during FSC, we failed in MD CAT. So डॉक्टर का ऑप्शन तो खत्म है। अब उसके बाद जो है वहां से एस्केप के लिए एग्रीकल्चर रख लिया। तो अब एग्रीकल्चर की डिग्री जो है 4 साल पूरे कर लिए हैं। व्हाट नेक्स्ट? सो एक तरह का टोटली ब्लैंक था, कुछ समझ नहीं आ रही है कि व्हाट नेक्स्ट। सो लेकिन माइंड में बैक एंड पे जो है चीज़ें डीप डाउन किसी ना किसी हद तक खुद को जो है डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पे वो स्ट्रगल थोड़ी बहुत जो है चल रही थी, लेकिन जो है प्रॉपर उसकी क्लियर जो है वो एक माइंड मैपिंग नहीं थी। राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री मैंने अमल कैरियर पे फेलोशिप ज्वाइन की थी, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो माइंड में एक वेज आइडियाज़ थे, जो चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, तो मैंने उनको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की। अमल ने काफ़ी हद तक जो है उसमें एक की रोल प्ले किया था उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए। ड्यूरिंग फेलोशिप मैंने वहाँ पे एक छोटे से सेटअप को ज्वाइन किया पाकिस्तान में, अपने ही फील्ड में, कि चलो डिग्री तो सारी कोविड में गुजरी है, नॉलेज है नहीं किसी चीज़ का भी, चीज़ें जो है वो टोटली माइंड से ऊपर हैं, प्लांट्स के इवन के नेम तक नहीं आते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस जर्नी में अमल ने चीज़ें जो पॉलिश की, उसने मतलब वो क्लियर किया थोड़ा कंसेप्ट जो है। उसके बाद उस स्टार्टअप में, उस वेंचर में साथ ज्वाइन किया, कुछ थोड़ा वर्कशॉप्स अटेंड की, कुछ कॉन्फ्रेंसेस ली साथ में। तो डिग्री के बाद जो है इस तरह चीज़ें जो है वो एक रोड मैप कह लें क्रिएट होता गया कि with the passage of time I understand कि it's highly underrated प्रोफेशन here in Pakistan। हॉर्टिकल्चर जिस एरिया में मैं रह रहा था, फैसलाबाद की अगर बात करें, तो वहाँ पे पीपल aren't going to pay you what's worthy, इवन के दे वांट ग्रीनरी, उनको ग्रीनरी चाहिए है, दे वांट समथिंग लाइक दैट, लेकिन दे आर गोइंग टू पे दैट। सो हमने वहाँ पे ये रियलाइज़ किया कि चीज़ें जो हैं वो इस वे में तो होने होने वाली नहीं है। अगर हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या सीन है कि मतलब 35 to 40 K जो है आपको पर मंथ सैलरी जो है आप उस पर लेके तो बैठते हैं आप। देन चीज़ें जो है वो चल रही थी, इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस आई इधर यूएई में, तो मैंने उसके ऊपर देखना शुरू किया, वो भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी।
तो मैंने सर्च करना शुरू किया और मैंने देखा कि मतलब यूएई जो है वो इसमें ग्रीनरी को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो वाई नॉट लेट्स ट्राई ओवर देयर एंड देखते हैं कि चीज़ें वहाँ के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। ड्यूरिंग माई लाइक जॉब ओवर हेयर इन पाकिस्तान मैंने साथ साथ चीज़ें स्टार्ट करनी रिसर्च शुरू की कि मतलब किस तरीके से अगर हमने ये पाथ चूज़ करना है तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चाहिए हैं, यहाँ पे आने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। सबसे जो ज़्यादा रेजिस्टेंस थी वो ये चीज़ थी कि जनाब आई एम द फर्स्ट पर्सन अपनी फैमिली में से जो हु हैज़ ब्रेक द चेन्स, जो अपने उस लाइक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से यहाँ पे आया है till this level. I am the first one who moved abroad from like my family. So it was like big challenge for me कि मतलब कैसे मैंने सबको एग्री करना है और कैसे चीज़ें जो है वो लेके चलनी है ताकि जो है जो चीज़ मुझे इंस्पायर कर रही है वो वहाँ पे नहीं मिल रही है, जो चीज़ मुझे चाहिए है वो वहाँ पे नहीं मिल रही है। देयर वॉज लाइक ग्रेट रेजिस्टेंस रिगार्डिंग दिस, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, वो है ना कि मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा। तो बिल्कुल डॉट से डॉट मिलते गए तो एट लास्ट आई वाज हेयर। लेकिन जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो इट वाज टोटली न्यू एक्सपीरियंस एज वेल। लाइक विजिट वीज़ा पे हम यहाँ पे आ गए हैं तो टोटली न्यू कंट्री है। अब तो वहाँ पे तो काफ़ी दोस्त हैं, जिसको कॉल करो जब मर्जी जनाब बंदा वहाँ पे बैठ जाए, गपशप हो जाए और कोई भी चीज़ मसला मसाला तो हो सोल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप खुद के खुद ही हैं, कोई मतलब आपका यहाँ पे हामी नासिर नहीं है जिसने आपको गाइड करना है, जिसने आपको चीज़ें करके देनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, जर्नी जो तय करके यहाँ तक आए हैं। शुरू के 2 मंथ्स जो यहाँ पे थे दैट वाज आल्सो क्वाइट चैलेंजिंग एज वेल, जिसमें हम जॉब सर्च कर रहे थे, डिफरेंट कंपनीज को अप्लाई कर रहे थे, फिजिकली जा रहे थे। सॉरी इट्स गोइंग क्वाइट लॉन्ग बट आई वांट टू शेयर वन लाइक पॉइंट विच आई लाइक फेस ओवर हियर। जब हम विजिट वीजा पे थे तो आई वाज हैविंग लाइक यार कंपनीज को ना फिजिकली रीच करना चाहिए, जो कंपनीज के ऑफिस है वहां पे जाकर उनको सीवी देनी चाहिए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरे नियरेस्ट में राउंड अबाउट में मतलब कौन सी चीज़ें जो है, कौन सी कंपनी है वो यहाँ पे है। कंपनी सर्च करके तो शुरू में चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज मैनेज करना उनको बहुत मुश्किल होता है ना। तो मैंने कहा कि चलो पैदल चलते हैं। वो शुरू में जब लोकेशन लगाई तो दैट वाज अराउंड 4 किलोमीटर वहाँ से ना, जहाँ पे मैं था। तो पैदल चलना शुरू किया, पैदल चलते 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 तो वो 4 किलोमीटर का जो है कोई 7-8 किलोमीटर बन गया वो। जब वहां पे पहुंचे हैं, पहुंच के जो है ना कंपनी वालों को कॉल की कि मतलब हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, हमें वहाँ पे ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो काइंडली आप मतलब बता दें कौन सा ऑफिस नंबर है। दे साइड के हम तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वी आर ऑनलाइन। वी वर लाइक के यार ये क्या सीन है मतलब। तो दिस वाज स्ट्रगल इन्वॉल्व द वे वेयर आई एम राइट नाउ, द पोजीशन वेयर आई एम राइट नाउ। इस तरह नहीं है कि जैसा आपको लुक नज़र आ रहा है, जो जर्नी जिस पोजीशन पे हम नज़र आ रहे हैं तो मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही था कि सीधा हम एकदम से यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एंड देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, दैट स्ट्रगल एंड sacrifices involved the way where I am right now. Right. Thank you so much for taking us like back in time and sharing about how you paved your way throughout, facing the family barriers and even financial struggles were there as well. And I was really excited about the in-person resume drop that you shared, or it turned out that the office was not there over here. But we would really love to know that how were you able to secure this current job, this current role? Yeah, definitely. If I talk about my current role, so I would mention like you must be at right place at right time. If you are Mhm. at right place at right time, so you can acquire thing the which you want. The same scenario happened for this position. Uh, I reached out to a guy who was working in this company, जिसके थ्रू I like got a call for interview. अब था क्या कि दे वर इन नीड ऑफ सुपरवाइजर। एट दैट टाइम दे वर इन नीड ऑफ सुपरवाइजर, सो एट द राइट टाइम एट राइट मोमेंट आई वाज द वन जिसने वो डोर नॉक किया। बैक देन here was like our senior, he's like a highly senior, he's here in UAE like from quite 10 to 11 years। उसके साथ मतलब ऑफ एंड ऑन मैसेज पे, कॉल पे बातचीत होती रहती थी जब हम यहाँ पे आए थे।
किसी मतलब किसी कंपनी में कोई पोजीशन हो, उस पे सीवी वगैरह शेयर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपने यू हैव टू नॉक एवरी डोर। कोई भी आपने जो है दरवाज़ा खटखटाए बगैर नहीं रहना है। जो भी आपका एक एक सेकंड है, एक एक दिन है, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, जब तक आप जॉब सिक्योर नहीं कर लेते हैं, आपने हर छोटे से छोटा डोर जो है वो नॉक करना है। सो इसी तरह हुआ ये, मैंने एक रीच आउट किया एक पर्सन को, सर्टेन पर्सन को इस कंपनी में, तो दे वर इन नीड ऑफ सुपरवाइजर एट देयर साइट। So they said like, okay, I will like refer your CV to my operation manager. So the HR will call you regarding this. मैंने कहा okay, that's fine. So this position was in Abu Dhabi, and at that time I was living in Dubai. So they called me like after 2 hours of this conversation with that guy. They said like, are you available for an interview, physical interview? After short introduction over call, they said like, if you are available for a physical interview, so we can schedule at your earliest. मैंने कहा okay, that's fine. They said like, when are you like available for a physical interview? मैंने कहा कि right now I am residing in Dubai, so it will be like not easy for me to like see you there in Abu Dhabi. So if you can schedule by tomorrow. They said okay, fine. So uh, I like had that interview. I like cleared that interview, and now after that I like was hired as a supervisor on that side. Basically the need was in highly prestigious project, which is Sea Palace, which is actually the president's house of the president of the UAE, Sheikh Mohammed. So this is how your struggle pays you. I wasn't like from nowhere. I don't know like I will be able to like work in this much high standard and high prestigious property. Initially, I don't have any idea like I will be working as a landscape manager and I will be going to the UAE. So this is how your struggle pays off. This is how your sacrifices like pays you. At that moment, you don't realize like you have no idea कि जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे पे बैक करेगा। यू फेल इन नेगेटिविज्म। आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि यार पता नहीं मुझे ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। बट if you are like having a positive attitude, positive struggle, so अल्लाह जो है वो आपके रास्ते जरूर बनाता है। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे आके, वो सी पैलेस था, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट का जो घर है, उस साइड को मैंने मैनेज करना शुरू किया था। From that where I started, and right now I'm also like promoted to landscape engineer. So this is how things are going. That's amazing. That's really the power of consistency. And Consistency. the example that you have shared, you were very consistent in efforts, and that is how you were able to secure that job. So well done. Noor Asif, let's take a step forward. Um, we would love to know that what steps did you take for your professional development that helped you to get where you are right now? Here we are not just talking about your academic degree, but also like other professional development courses that you took or anything else that helped you to ace in your job. Yeah, sure. So first of all, I would mention like the degree isn't like the only way to excel in your professional career or in your professional growth, the way where you want the things to be. और समटाइम इवन के आई हैव सीन जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जिनके पास दे हैड द डिग्री बट दे आर डूइंग द जॉब ऑफ द नॉन टेक्निकल इन लाइक नॉन टेक्निकल फील्ड। दे आर लाइक डूइंग द जॉब ऑफ एडमिन्स, दे आर लाइक मैनेजिंग द डॉक्यूमेंट्स। सो दिस इज वेयर योर डायरेक्शन मैटर्स। दिस इज वेयर योर लाइक इनिशियल स्टेप मैटर, व्हाट यू वांट from your life or what you want from your career. सो इफ़ आई टॉक अबाउट के मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी पे आने से पहले जो है एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो की। सो आई वुड मेंशन के माय इनिशियल जॉब विच आई लाइक स्टार्टेड इन पाकिस्तान आल्सो फेवर्ड मी अ लॉट। Like that wasn't kind of like a big company. That was like we can say startup or a venture at initial stage, in which like I was like able to attend the different seminars, different workshops, which were held in like UAF and also few were in Lahore and Faisalabad. So
This was the extra things which I have did during my like initial stages of my journey, except the academic background. Academic background is one thing, but how you have to like polish your soft skills, how you have to be expert, be perfect, or be professional in your soft skills in like way of delivering things. Academic background will not like teach you how you have to communicate and how you have to manage teams and how you have to show the leadership while you are in a position where there is a role for leadership. So this is how like things get started when I attended different workshops, different conferences, and also I have took a few courses from Coursera regarding this. I still know when I started university degree, so I was very weak in communicating in English as well. So there must be one certification and listed on my Coursera, which is regarding English to how to be professional in English and like communication. So this is really matters as well. Like in your professional journey, you must acquire some extra knowledge. You must attend extra workshops, extra conferences along with your degree. Not after with your degree, it will save your time. If you wanna excel in any career, along technical skills, you must be like expert in your soft skills. Perfect. That makes sense. Okay, going for seminars, conferences, and then taking up online courses that usually help, that really helps a Yeah. lot. Right. So, Noor, Asif, as we like move towards the final stretch of our conversation, um, I would love to know that what recommendations that you have for someone who, for the people for our Amal community or even beyond, for the people who are planning to apply for jobs in UAE, or someone who is already in Abu Dhabi, suppose, and is unable to secure a job. So, any tips for them? Yeah, sure. Thank you for asking this question. This is really needed question right now. The situation of the visas here in UAE is very tough right now. The condition and overall scenario of getting visa is quite tough. There are a lot of people over here who are here in visit visa. Actually, UAE government has made some modifications in their visa processing and the visit visa the person to लोग यहाँ पे विजिट वीजा पे आते हैं, लेकिन अभी इन्होंने रिसेंट कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, कुछ चेंजेस की हैं, इन्होंने जॉब सीकर्स के लिए टोटली एक सेपरेट कैटेगरी रख दी है. इनिशियली इट वाज मेंशन्ड ऑफिशियली, लेकिन उस पे मतलब अप्लाई नहीं कर रहे थे वो स्टेट में ना यहाँ पे. बट अभी उन्होंने क्या किया है कि दे हैव ऑफिशियली लॉन्च दैट. लेके आ रहा है तो उसको यहाँ पे अगर वो दैट कंपनी विल बी फाइंड. और वो फाइन थोड़ा नहीं है. दैट्स फाइन इज रेंजिंग फ्रॉम 50 lakhs 50 lakh टू अबव 50 lakh dirham. And that's why like companies are not giving any opportunity. So they are what they are doing, अगर कोई विजिट वीजा पे है तो उसको वो जॉब नहीं दे रहे. दे आर ओनली गिविंग जॉब्स जो यहीं पे है, किसी और कंपनी से कैंसिल हुआ है और दे वांट टू ऑफ दैट रोल. सो दैट्स हाउ लाइक दे आर मैनेजिंग थिंग्स राइट नाउ. सो इट्स क्वाइट लाइक चैलेंजिंग. जो वहाँ पे एजेंट्स हैं, जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि करंटली सिचुएशन क्या चल रही है. सो द वन हु इज कमिंग ओवर हेयर, उसके लिए ये एक लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है कि मतलब वो सबसे पहले जो है प्रॉपर रिसर्च करे कि उसने अगर वीज़ा लेके आना है यहाँ पे. आई नो ऑल ऑफ द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कोई भी यूएई जो है वो हमारी मतलब जो इस मिडिल क्लास से, या मतलब इवन वी कैन से लाइक लिटिल अपर फ्रॉम मिडिल क्लास, कोई भी यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं. दे आर कमिंग हेयर ओवर फॉर अ जॉब और फॉर द बेटर फ्यूचर. तो उसके लिए ये है कि मतलब आप मिनिमम मिनिमम जो अभी जो कॉस्ट आ रही है अराउंड 5 लाख आ रही है. गेटिंग टिकट, गेटिंग वीजा एंड फॉर ऑन अटेस्टेशन ऑफ ऑल द डिग्री एंड डॉक्यूमेंट्स. सो अगर आप इतनी कॉस्ट बियर करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो यू मस्ट बी लाइक कमिंग इन द राइट कैटेगरी. यू मस्ट टेक द जॉब सीकर वीजा
जॉब सीकर वीज़ा जो है वो विजिट वीज़ा से उन्होंने कम, उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। जॉब सीकर वीज़ा की कॉस्ट कम है, लेकिन इसमें आपको क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपने एक्स्ट्रा साथ पे करनी है। कि आप का 2 मंथ का वीज़ा है तो यू हैव टू पे लाइक फॉर मेडिकल इंश्योरेंस वंस यू आर कमिंग ओवर हेयर। After coming, you have to pay like for medical insurance. So this must be the clear understanding, complete research while coming over here. रिसर्च जरूरी है, क्योंकि अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हैं तो अगर आपका वीजा यहाँ पे कन्वर्ट ही नहीं होता है तो आप जितनी कॉस्ट बियर करके आए हैं तो नो बडी वांट्स के, मतलब वो जब यहाँ पे आ गया है तो वो वापस जाए और फिर जो है वही जिंदगी जो है वही कल्चर जो है वही ऑप्ट करे। नो बडी वांट्स, सो देयर मस्ट बी द कंप्लीट बैकग्राउंड रिसर्च। और जो भी यहाँ पे आ गया है उसके लिए ये है कि यहाँ तो वो चेक करे अपने एजेंट से, कंसल्टेंट से, कि मतलब यहाँ पे मेरा वीज़ा जो है वो जॉब सीकर में कन्वर्ट हो सकता है या अभी मुझे इसी के साथ करना पड़ेगा। या फिर चेक करे कि कौन सी स्टेट में, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो अबू धाबी में आ रहा है इस चीज़ का ना। दुबई जो है दैट इज़ क्वाइट रिजिलियंट, उसमें जो है चीज़ें अभी भी वो प्रोसेस कर रहे हैं। इवन के मतलब आपके पास विजिट वीज़ा है तो भी जो है आप, अगर आपके पास विजिट वीज़ा के साथ वैलिड डिग्री डॉक्यूमेंट है, लेबर को वीज़ा अभी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर आपके पास वैलिड डिग्री है तो आप दुबई में, शारजा में, किसी और स्टेट में जो है वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अबू धाबी में अभी नहीं हो रहा। लेकिन जो भी नेक्स्ट बंदा मूव करने का सोच रहा है तो ही मस्ट बी कमिंग ऑन राइट कैटेगरी लाइक जॉब सीकर वीज़ा। सो दैट्स लाइक पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द थिंग्स आई एम लाइक वाचिंग ओवर हियर इन यूएई, सो दैट्स फॉर देम। Thank you so much, Noor Asif, for sharing that. That's actually first-hand experience that you're sharing. And या this insight is really valuable. And I hope it will be valuable for all the alumni who are watching us, watching this conversation as well. I have one last final question from you, and then we'll wrap up this chat. What is one advice that you have for all the alumni or the fellows who are about to graduate and watching this conversation? या डेफिनेटली। सो I have a piece of advice ke don't afraid to like step out of your comfort zone. Like if I am here, so it's all because I stepped out of my comfort zone. It was not easy to be here. So if you want a success in your life, you can't achieve that in your comfort zone while living in your comfort zone, while living in your cage. You have to break that chain. You have to like break that cage. You have to step out of your comfort zone once you want to achieve your success in your life. Hmm. So your journey may have an unexpected turns. Your Hmm. journey may have unexpected turns, but each step adds valuable experience that brings you closer to your goals. That's all. The piece of advice. There must be times. I would say like my journey wasn't even straight. Initially, I wasn't know the way where I am right now, the position where I am right now. So there must be lot of turns in your journey, but it will bring you like somewhat close to your goals, somewhat close to your goals. So always like be on the path, be on the journey, and don't afraid to step out of your comfort zone. That's the piece of Perfect. advice. Perfect. Thank you so much, Nurazif, for sharing that. And obviously, totally agree that okay, we have to step out of our comfort zone because that's where growth takes place. Yeah. I would really like you to I would really like to thank you for sharing your story, your journey, your struggles, and all that you aspire for. Um, your story is actually a powerful reminder for all of us that strength comes from perseverance and staying true to our goals, right? And Yeah, exactly. it's in moments like these that we see the value of community. Through these conversations, we are learning from each other, supporting each other, and even growing together. So, as we close this conversation, I'd like to leave you and all our audience with this thought. This is one thing that I always say, that no matter where you are in your journey, remember that every challenge is an opportunity in disguise, right? Every And challenge is an keep moving opportunity, forward, exactly. trust in your path, and know that you have a community here that believes in you. So again, once again, thank you so much for joining, Noor Asif. And to all our audience, I look forward to see you in the next session where we will continue to share and celebrate the remarkable stories of our alumni. And until then, take care, stay connected, and keep striving for your dreams.
Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you all and have a wonderful evening.